ओके सर। चलिए ठीक है। दिस इज नाउ, you know, we have started the specialization portion that carries 60 marks, and you are aware about the exam is, you know, for which you have applied. Many of you may have applied, are going to apply. This is the introductory module. That is, many of you may be not knowing the sociology. यानी जो ये स्पेशलाइजेशन पोर्शन है, बहुत सारों को पता ही नहीं है व्हाट वुड बी द स्पेशलाइजेशन पोर्शन, या हम जो 60 मार्क्स अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, व्हाट आर दी 60 मार्क्स रिलेटेड अबाउट, इसी के बारे में हम इंट्रोडक्शन देंगे। दिस इज माय सेल्फ, यू नो मी, मेनी ऑफ यू। स्लाइड इज विजिबल? स्लाइड दिख रहा है? कोई अनम्यूट करके बताए, स्लाइड दिख रहा है? और स्लाइड इज मूविंग? यस सर। This is the slide which is very important. Study hard and you will do well in life. The second advice, as is often made, is if you do this subject or set of subjects, you will have a better chance of getting a job in the future. ये आप सुनते आए हैं। बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि you study hard and you will do well in life. और दूसरी एडवाइस होती है कि अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज किए होते या ये सब्जेक्ट चूज किए होते तो आपके बेटर चांसेस बन जाते थे जॉब के लिए। बट यू हैव नाउ अप्लाइड और यू आर गोइंग टू अप्लाई। अब आपने चूज किया है टू बिकम फीमेल सुपरवाइजर्स। एक उसूल रहना चाहिए ज़िंदगी में, अगर आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसको फिर ड्रीम बनाइए। उसके लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। एक तो है डेडिकेशन, दूसरी है डिटर्मिनेशन, और तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में बहुत सारी कमी है हम सब लोगों में। फ्री क्लास भी था ये, तो 200-300 लोगों में से, 400 लोगों में से पता नहीं कुछ 50-40 अटेंड कर रहे हैं। तो तीन चीजें चाहिए। कौन कौन सी चीजें? डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। और अब ये यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट है कि if you do this subject or set of subjects, you have a better chance of getting a job. Now you have opted for appearing in this क्या कहते हैं इसको, सुपरवाइजर एग्जामिनेशन। अब आपको इसी पे फोकस करना है। Now you have gone through slide number this specialization carries, आजकल बहुत सारे नए हैं इसमें। आई थिंक ये स्लाइड पे आप देख रहे हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट में है, सब यूनिट्स 5 है, सेकंड में इतनी यूनिट्स है, थर्ड में सब यूनिट्स 5 है, यूनिट नंबर 4 में 5 यूनिट्स है, फिफ्थ में 6 यूनिट्स है सब यूनिट्स, सिक्स्थ में 8 सब यूनिट्स है। अगर आप सिलेबस को सुपरफिशियल नज़र मारेंगे तो ये तकरीबन तकरीबन सारी बेसिक सोशियोलॉजी बनती है। पहले जाएंगे फिर से पिछले वाले स्लाइड में, घबराने की जरूरत है। ये वाला स्लाइड सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, केस्ट, क्लास, जब तक ये चीज़ें इनकी डिफिनीशंस पता ना हो तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे दूसरे यूनिट में है जेंडर इनइक्वालिटीज। जेंडर आपको पता होना चाहिए, एंड देन देयर आर इनइक्वालिटीज, दे आर रियलिटीज। जेंडर में जो इनइक्वालिटीज है दे आर रियलिटीज बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे मूवमेंट्स है, वुमेन एम्पावरमेंट एटसेट्रा, वुमेन राइट्स, वुमेन रिजर्वेशन बिल, वो आता है अंडर जेंडर इनइक्वालिटीज। एंड व्हाट आर इश्यूज विद द जेंडर, which gender is superior gender, why, what is feminism, what are gender laws, what are human rights, ये सारी चीजें तब हमें पता चलेंगे जब when we know the basics. So this unit number 2, it would be carrying more weightage for your
जिस आई मीन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। यहाँ पे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, फोबिया होता है, ओसीडी, ये हम सारे डील करेंगे। ह्यूमन राइट्स, जनरल कंसेप्ट क्या है, ह्यूमन बीइंग्स एक। एक कहाँ मिलता है? राइट। यहाँ पे किसी का अनम्यूट है और कोई लड़का है शायद क्लास में। इसी तरह यूनिट नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस टाइम जो हमारा फोकस रहेगा वो है स्लाइड नंबर दिस। स्लाइड विजिबल हुआ? यस सर। किसी का अनम्यूट है और शायद ये, अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि सब म्यूट रखे, क्योंकि वी आर न्यू विथ मेनी ऑफ यू विल बी न्यू विथ सोशियोलॉजी एंड सबको सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट नहीं रहा होगा। सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। अगर डिफिनेशन की तरफ जाएंगे, सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी एंड इट इज ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ग्रुप्स एंड ग्रुप इंटरेक्शन। दो चीजें यहाँ पे आ गई। एक मिनट, इसको हम स्क्रीन है विजिबल। सोशियोलॉजी में दो चीजें आ गई। एक है सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी, यानी सोशियोलॉजी अगर एक ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, इसमें हम साइंस कैसे करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज ए सिस्टमैटिक स्टडी। अब सिस्टमैटिक स्टडी कैसे है, इसमें हमें एक सिस्टम के मुताबिक चलना है। और स्टडी किन के बारे में है, इट इज स्टडी ऑफ ग्रुप्स। विच ग्रुप्स? इट इज नॉट द एनिमल ग्रुप्स, इट इज द ह्यूमन ग्रुप्स एंड हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स। आपस में इंसान कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अगर इंसानों ने एक ग्रुप बनाया है, एक होमोजीनियस ग्रुप, हाउ वन होमोजीनियस ग्रुप इंटरेक्ट्स विद अदर होमोजीनियस ग्रुप। सो सोशियोलॉजी इंक्लूड्स ग्रुप इंटरेक्शंस। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन सोसाइटीज विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी ये चीजें आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में सारी पता नहीं चलेंगी। सोसाइटीज इंटरेक्शंस, ग्रुप इंटरेक्शंस, ये आगे आगे पता चलेगा। एंड वी हैव देन सोशल इंटरेक्शंस। आपने जब ये कोविड में एक स्लोगन चला कि कीप सोशल डिस्टेंस, सब उन्हें बताया था कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे। सोशल डिस्टेंस से उस टाइम क्या मतलब था? वाज इट दैट वी डू नॉट टॉक वन अनदर, या वाज इट दैट वी कीप ए फिजिकल डिस्टेंस? वो कैसा था? उस सोशल डिस्टेंस का मतलब क्या था? वाज इट कि हम एक दूसरे के साथ बात करना ही छोड़े, या एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करें? कोई बताए? दैट वाज टू कीप द फिजिकल डिस्टेंस, यानी एक दूसरे के दरमियान एक फैसला रखे ताकि जो कोविड ट्रांसमिशन था वायरस का वो ना हो। एंड हियर वी हैव स्मॉल ग्रुप्स, we have personal groups, and we have very large groups. How those groups are formed, what are the interactions among those groups? Sociology concerns with all this group interactions. And a group of people who live in a defined geographic area, who interact with one another and who share a common culture, is what sociologists call a study, a society. यानी सोसाइटी क्या बनती है? सोसाइटी की एक लेमैन डिफिनीशन है यहाँ पे, जब तक हम आगे ना जाए। सोसाइटी का एक डिफिनीशन है कि एक जियोग्राफिकल एरिया हम लेंगे और उस जियोग्राफिकल एरिया में ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं एंड दोज ग्रुप ऑफ पीपल दे इंटरेक्ट विथ वन अनदर and when they share the common culture, that is the purpose of what sociologists study, and that they study the society. So society is what? Society is web of interactions. Am I audible? मैं audible हूँ? यस सर। सोसाइटी क्या है अब? इट इज ए वेब ऑफ इंटरेक्शंस। वेब ऑफ इंटरेक्शंस क्या होता है? वेब हो गया जिस तरह वर्ल्ड वाइड वेब, www.world-wide-web, ये वेब क्या है? तो ऐसे बात वुचमुत तमिस सह पंजस मज आसान सह मसल हूँ, दैट इज द वेब। एंड दिस वेब जाल ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ पीपल, इंटरेक्शंस ऑफ ग्रुप्स,
This will be the focus of the sociology. आवा समझ? समझ आ रहा है? Yes, sir. जी यथस न ये तथस कर ब रिपीट. अच्छा, मूविंग ऑन, हम थोड़ा आगे जाए. यह स्लाइड तोरा फिक्र. This is, see, sociologists study all aspects and levels of society. There are levels in the society. What would be those levels? For example, can anybody say what is the level of society? The lowest level of the society is the individual. And then two individuals interact. When two individuals interact and the interaction is in form of a marriage, then that level becomes the family. And when so many families interact, they become population. So there are levels in the society, and those levels, how they behave, what is the interaction among the levels, वो हमें आगे पढ़ना है. Sociologists working from micro level, दो लेवल के सोशलॉजिस्ट्स होते हैं. एक लेवल ऑफ सोशलॉजिस्ट है, दे स्टडी एट माइक्रो लेवल. माइक्रो लेवल मीन्स एट स्मॉलर लेवल. दे स्टडी स्मॉलर ग्रुप्स, एंड when the groups are smaller, then there are individual interactions. For example, अगर कोई बड़े ओहदे पे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वी हैव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग वी हैव chief engineer. Chief engineer would not be having the interaction with all the people he is commanding over. लेकिन अगर हम एक स्मॉल इंटरेक्शन लेंगे, तहसील ऑफिस में एक तहसीलदार, he would be knowing all people working in his office. इसी तरह एक कॉलेज लेंगे, कॉलेज में एक प्रिंसिपल would be knowing all people there, and there would be day-to-day interactions, and individuals will interact more. But when the group is small, so in smaller group interactions will be more. While at macro level, at larger level, there would be larger groups and larger societies, and therefore at larger level the interactions would not be as closer, as frequent as there are in the micro level. ये समझ आ रहा है? फातिमा आपका अनम्यूट है. तो अच्छु समझ यवन. सोशलॉजी में जी हमें सर. दो लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन है. एक है माइक्रो लेवल इंटरेक्शन. माइक्रो लेवल इंटरेक्शन में एक स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, एंड इन स्मॉल ग्रुप्स देयर आर इंडिविजुअल इंटरेक्शंस. वेल एट मैक्रो लेवल में बहुत सारे बड़े ग्रुप्स बनते हैं, बहुत सारे बड़े इदारे बनते हैं, और इन इदारों पे बड़ा एक बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, और बड़े ऑफिसर्स को टू इंटरेक्ट विथ ऑल सबऑर्डिनेट्स पॉसिबल नहीं होता है. लेकिन जब एक इंस्टीट्यूशन छोटा होता है और उस इंस्टीट्यूशन में देयर आर मोर इंडिविजुअल इंटरेक्शंस, एंड दैट स्टडी बिकम द स्टडी एट माइक्रो लेवल. सो वी हैव माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल. ये हम आगे पढ़ेंगे. अभी ये सारा इंट्रोडक्शन में चलता है. फॉर एग्जांपल, माइक्रो लेवल स्टडी माइट लुक एट accepted rules of conservation in various groups such as among teenagers, among business professionals. एक बिजनेस फर्म है, एक कॉरपोरेट सेक्टर है, एक बैंक है, वहां पे जो इंटरेक्शंस होंगे, दोज इंटरेक्शंस वुड बी, क्योंकि एक बैंक में अगर कुछ जाए बैंक वहां पे एक ऑफिस है, वहां पे एक ब्रांच है, उस ब्रांच में एक ही किस्म के मुलाजिम रोज जाते हैं और उनमें एक फॉर्मल टाइप ऑफ इंटरेक्शन पैदा होती है. लेकिन अगर ये बैंक एट लार्जर लेवल लेंगे, एट जम्मू कश्मीर लेवल लेंगे, जम्मू कश्मीर बैंक, and between bank branches there would not be as formal interactions as would be in the single branch. ये आया समझ? जिस तरह एक ब्रांच में आपस में जो एम्प्लॉयज है वहां पे उनमें एक इंटरेक्शन होगी, that interaction would be of one kind, and the interaction at larger level would be of another kind. आपको आया समझ? So sociologists have to deal. आप कोई अनम्यूट करके बताए कि तो मेन समझ यवन बह क्या वन. सोशलॉजिस्ट डील करुन एट माइक्रो लेवल एज वेल एज Macro level. मैक्रो लेवल. ये चीजें हमें आगे समझ आ जाएंगी और ज्यादा. पकवा ब्रोट पाए. देखिए, इन सोशोलॉजिकल टर्म्स
Society जो है, it refers to group of people who live in a definable community and share same cultural components. On a broader scale, society consists of people and institutions around us, our shared beliefs, our cultural ideas. Typically, many societies also share political authority. यहाँ बनता है field थोड़ा broader. अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, it refers to a group of people who live in a definable community. For example, यहाँ पे J&K में एक कम्युनिटी है, they would be belonging to a particular class, like there is a Gojar community. They would be having some common interests, and that interest, for that interest, they would be fighting. They would be seeking those rights. For example, they have the rights in the forest. उनके अपने डिजायर्ड इंटरेस्ट्स होंगे, और उनका एक कल्चरल प्रोसीजर होता है, उनमें एक कल्चर पाया जाता है, and those cultural elements they would be sharing. On a broader scale, society में बहुत सारे लोग आते हैं, and then institutions बनते हैं, and institutions में एक किस्म के beliefs आते हैं. For example, a religion becomes a belief, how to marry becomes a belief, what are the rules to be followed in a marriage becomes a belief. For example, in some people there are belief that the society is matrilineal. Matrilineal होता है जहाँ पे फीमेल कंट्रोल होता है. सम सोसाइटीज वुड बी पैट्रिलिनियल, जहाँ पे मेल कंट्रोल होता है. सो वुड बी differences in cultural institutions, so would be differences in beliefs. Typically many societies, they would be sharing a political authority. For example, आप जानते हैं कि a particular community इनका एक अपना वोट बैंक है. फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा केस्ट पॉलिटिक्स, यानी वो पॉलिटिक्स, वो सियासत जो केस्ट इंक्लूड करती है, और कास्ट. हेलो, सर. मैं ऑडिबल हूँ? यस सर. ऑडिबल हूँ मैं? Yes, sir. यस सर. यस सर. मसला ये हुआ था कि इंटरनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है. सोशियोलॉजी में व्हाट इट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी. फिर से इंटरनेट में आप सुन पा रहे हो मुझे? एम आई ऑडिबल? सोशियोलॉजी में क्या है? इट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल. यानी ह्यूमन सोसाइटी में Yes, sir. व्हाट इज देयर? इट इज ए होल, बट what is that whole? Whole क्या गो? होल मीन्स सारा. होल ऑफ व्हाट? होल ऑफ, यहां पे आपसे पूछ रहा हूं, सोशियोलॉजी स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एज ए होल. व्हाट इज मेंट बाय दैट? यहां पे सोशियोलॉजी स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एज ए होल, but the whole is interconnected. Who are interconnected? As one. People are interconnected. Human beings are interconnected. And when the human beings interconnect among themselves, they form a whole. And that whole becomes the society. And in a society, overall, there would be the interactions. So, how society and the individual interact with each other? You see, in a society, अब जब मैरिज की बात आती है या कोई बड़ा दिन होता है, फॉर एग्जाम्पल वही इन कश्मीर हैव रोहन पोश. वो रोहन पोश एक इंडिविजुअल नहीं करता है. इन रोहन पोश होल विलेज पार्टिसिपेट्स. अख सोरी गाम च गसन, वहाँ पे एक सेट ऑफ बिलीफ्स होता है, वहाँ पे एक प्रोसीजर होता है, पछ तुलन पोश गसन हेथ कब्रिस्तान. that becomes the belief, one kind of belief, but that belief has arisen as a result of interaction of individuals, and those individuals act as a whole. अगर वह कह दप गामस मज बह मनाव वह ये रोहन पोश कह, सु एक्सकोमुनिकेट कर, तमिस सत ताल्लुकात चटन. सो
this interaction among the people, this forms a whole, and how the people interact in this society and how individuals interact. For example, there are norms. Norms सुने होंगे आपने. There are values. There are mores, mores, mores. There are customs. There are traditions. ये सारी चीजें आपको आगे आगे सुनने हैं. स्क्रीन है? स्क्रीन गया. स्क्रीन गया. अच्छा. One of the tasks of sociology is to unravel the connection between personal problem and public issue. एक मसला है सोशियोलॉजी में कि एक नो सर. am I audible? ये स्क्रीन नहीं आ रहा है. स्क्रीन आया आप स्क्रीन? स्क्रीन आया? नो सर. No. स्क्रीन नहीं आया. Yes, sir. Yes, sir. 1 minute. तो छा स्क्रीन छा जी सर. स्क्रीन है विजिबल? स्क्रीन छा? Yes, sir. देखिए तो तरने एक्सी लेक्चरस में सारी सोशियोलॉजी. Yes, sir. एक्सी लेक्चरस में तरने तो सोशियोलॉजी फिक्र किया. अख अहम मुद्दा छ सोशियोलॉजी हुन कि इट हैज टू अनरावल द कनेक्शन. यानी एक कनेक्शन है, उसको इसको अनरावल करना है, इसको रिवील करना है कि वो कनेक्शन क्या है. टू फाइंड दैट कनेक्शन between a personal problem and the public issue. For example, some people have some personal problem, and if that problem su problem hekan express karit keh, agar su problem express kari su bane public issue. For example, you can better understand. We have so many issues. Marriage का issue होता है, बाकी issues होते हैं, और you see the commonest issue this time is कि एक मसला हुआ है आजकल जो ज्यादा कॉमन है, ड्रग एडिक्शन. तो छु तरन फिक्र ड्रग एडिक्शन क्या छ? ड्रग एडिक्शन खतर यमिस ड्रग एडिक्शन छ गमत तन खतर छ ड्रग सोरी दुनिया. तमिस छ पर्सनल इशू बनियोमुत, मगर तमिस छ पर्सनल प्रॉब्लम बनियमत. बट दैट पर्सनल प्रॉब्लम इज नाउ, व्हाट इज दैट पर्सनल प्रॉब्लम? तो छूजन क्लासस में वो पर्सनल प्रॉब्लम एक ड्रग एडिक्ट है. ए ड्रग एडिक्ट हैज ए पर्सनल प्रॉब्लम. व्हाट इज पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ द ड्रग एडिक्ट? पब्लिक इशू. नहीं, एक ड्रग एडिक्ट को कौन सा प्रॉब्लम है पर्सनल? उसका पर्सनल प्रॉब्लम है कि उसको एडिक्शन हुआ है ड्रग्स के साथ, एंड ही कैन नॉट क्विट ड्रग्स. बट दैट हैज बिकम द पब्लिक इशू. How that has become the public issue? तो है कि वह खबर कुछ रिलेशन छड़. How a drug addict is a public issue. वो ड्रग एडिक्शन वाला कुछ भी कर सकता है. फॉर एग्जांपल अख शराब चवन, एंड दैट तम शराब चवन से डायरेक्ट सोशल इम्प्लीकेशंस. ये सोशियोलॉजी में एक एस्पेक्ट है जो हमें पढ़ना है. इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर डायलेक्टिकली लिंक्ड. यानी एक इंडिविजुअल सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता है, एंड सोसाइटी इज कंप्राइज्ड ऑफ द इंडिविजुअल्स. एक सोसाइटी इंडिविजुअल्स के बगैर नहीं बन सकती है, और एक इंडिविजुअल सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता है. देयर इज ए कनेक्शन, एंड एक सिविलाइज्ड सोसाइटी कम्स आउट ऑफ द सिविलाइज्ड इंडिविजुअल्स. हमारे पास 10 मिनट है, अब क्या करें? तो वेन्यू तो तौर क्या सोशियोलॉजी फिक्र कंटिन्यू करें. अच्छी तेल प्राउड कंटिन्यू करे. तो तोरा क्या सोशियोलॉजी फिक्र? तो तरन गोड़े फिक्र किए कमजाद तोरा फिक्र. C. Wright Mills rests his vision of the sociological imagination precisely in unraveling of how personal and public are related. मसलन यहाँ पे पब्लिक इशू है. कोई एक अडल्ट कह रहा है कि मुझे एक जगह शादी करनी है, बट सी हाउ मेनी इश्यूज कम दियर. क्या पता दोनों घर मान ना ओर योर, पता अगर मोन पत मा वो दाजुक मसले,
डावरी इश्यूज आएंगे, बाकी सारे इश्यूज आएंगे। एक इशू आएगा कि इसकी कास्ट अलग है, दूसरी कास्ट अलग है। सो एन इंडिविजुअल हैज टू अबाइड बाय द नॉर्म्स, by the rules, by the values of the society, and the society is formed of the individuals. आया ये स्लाइड समझ? Yes, sir. तो ये सॉरी समझ मगर तो छुन आ ये slide. Sociological imagination helps us to grasp history and biography and the relations between two within the society. It is its task is to promise the most fruitful distinction with which sociological imagination works in between personal troubles of milieu and the public issues of social structure. Troubles occur within the character of individual and within the range of his immediate relations with others. They have to do with the self and with those limited areas of social life of which he is directly personally aware of. Issues have to do with the matters that transcend the local environments of the individual and the range of his inner life. Neither life of an individual nor history of a society can be understood without understanding the both. यानी दो चीजें समझने के लिए एक तो लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल समझनी है और हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी समझनी है. For example, we have settled some societies which are nomadic societies, which are tribal societies. और अगर आप tribals में देखेंगे, how they marry, how they have the customs, how their traditions work, इनमें एक relation है. And that relation देखने के लिए हमें sociology जरूरत है. Zoomas पे कूता काल नेरन यह स्लाइड छे विजिबल. Yes, sir. स्लाइडस पे क्या छे? Peculiarities and inequalities. What is meant by it? गोड करो अख लकुट मकुट पोल अख यम दपन अस करो क्लास ब्या कंटिन्यू वनकसी तिम करन रेज देयर हैंड्स. अगर न तेल छु ब्या चीज में हावन. इस टाइम अगर क्लास कंटिन्यू करना है एक ने हैंड रेज किया. एम आई ऑडिबल? 2 3 4 5 6 फिर सारे करना ज्वाइन क्योंकि कम मिनट रह गए. इसके बाद हम इसके पीछे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं वो कैसे आएंगे. सो मेरा जान छन कनेक्टेड थ्रू दिस क्या कनेक्टेड थ्रू ऑडियो. यम पत करो इस ब्या क्लास तथ मज करो इस क्या कथ हम 7वीं तुल मगर अत थोद. साथी लोग चाहते हैं क्लास कंटिन्यू करे इस टाइम. 8 No, sir. सारे लोग. जी सर, यहाँ दिखता ही नहीं है रेज हैंड. क्या क्या? रेज हैंड वाला ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है मुझे. अच्छा अच्छा फिर ऐसे ही बताओ. जी सर, कंटिन्यू. ठीक है. देखिए अभी है हमारे पास टाइम. मुझे चैट बॉक्स नहीं दिखता है. जूमस पे ज्यादा असल क्लास गसन क्या ये वारे परेशानी है. चैट चैट दिख रहा था अभी वो नहीं आ रहा है. ठीक है 1 मिनट मैंने देखा. चैट में देख नहीं पा रहा हूँ ज्यादा. वुशु सर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर एक हेडिंग है पेक्यूलैरिटीज एंड इनइक्वालिटीज. यम छ सहल लफ्ज पेक्यूलर तो सिंगुलर. पेक्यूलर हो गया बहुत सारे. इनइक्वालिटीज हो गई नॉट इक्वलिटी यानी यकसनियत ना आसिन किया. एंड इनइक्वालिटी कब व्हेन विल इनइक्वालिटी अराइज. इनइक्वालिटी कब आ सकती है? व्हेन देयर इज पेक्यूलैरिटी. जब बहुत सारे इंटरेक्ट करेंगे एंड देयर विल बी द डिफरेंस इन ओपिनियन. देयर विल बी डिफरेंस इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस ख्यालातों में
बहुत सारे मसलों में differences है, and those differences would create inequalities. So inequalities will arise when there are pluralities. Plurality and inequality go side by side. अब यहाँ पे in contemporary world by mean the world where we live in. Contemporary world में मेरे साथी है आप इस time. We live together in this world, and this is our contemporary world. We belong in a sense to more than one society. इस time बहुत सारी societies. For example, you are linked to me this time, and this is a digital society. हम इस time जुड़े हुए हैं. हम कैसे जुड़े हुए हैं? We have created a digital society. We have created a what is this digital society? Wherein we are linked by the internet, wherein we have created for us cyberspace. And in this cyberspace, I have a friend circle in my Facebook or Instagram or Tumblr or LinkedIn or somewhere else. And so this becomes another society. We have industrial society. We have feminist society. We have so many societies. We have tribal society. We have more than one society. And when amidst foreigners refer to our society, they mean us Indian society. जब वेस्टर्न हमारे बारे में बात करेंगे, so they would call us Indian society. लेकिन जब हम हिंदुस्तान में खुद बैठे हुए हैं, we have different kinds of societies. For example, there will be industrial society, there will be a society which is living in villages, there will be society which is living in forests. But when amongst fellow Indians, we may use the term our society, and we denote a linguistic society, and we denote a ethnic community, or a religious society, or a tribal society. I will connote the meaning of all these terms. For example, when we say to foreigners, we are Indian society. Foreigners के लिए हम क्या हैं? कोई प्लीज जवाब दे. Foreigners के लिए हम क्या हैं? Indian society. Indian society. लेकिन यहाँ पे इंडिया में Indian society. हाँ, फॉरिनर्स के लिए हम इंडियन सोसाइटी है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में वी हैव यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एंड देयर आर डाइवर्स सोसाइटीज, बट इन दोज डाइवर्स सोसाइटीज देयर इज ए यूनिटी. एंड व्हाट इज दैट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी? सुच वारिया बोर्ड एस्पेक्ट, वारिया बोर्ड कंसेप्ट, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. यहाँ पे एक लिंग्विस्टिक सोसाइटी है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव तमिल्स who speak Tamil only. We have Gujaris who speak Gojri. We have people speaking Balti. We have other people speaking other languages. That is the group of people who have joined on the basis of they speak the same language. यानी एक group of people है जो एक ही language बोलते हैं. इसी तरह we have ethnic community. That is, we belong to a ethnic group. We are a religious community. For example, we have a Sikh community. This society is based on they share the same religion. We have tribal society. We have caste society. There is diversity, and this diversity decides the society we are talking about. What society we are talking about, and that is difficult to decide. ये difficult है decide करना. Also, this sociology thus becomes a very diverse field. A quote from Amartya Sen. You know Amartya Sen?